El Yusuf, footballer from 11 Chanapur, 4-wicket haul. Next level cricket. Assalamu alaikum, Saklan bhai. How are you? We are fine, but we are very tired. Undoubtedly, Saklan. I guess we don't hesitate in mentioning being on air. We are very tired and a lot of traveling around 200 kilometers every day, going to north, going to Sopor, going to Gandarbal, going to Shalaba, going to Magam. This is a very, very challenging job. Just driving the car, doing commentary for exactly 40 years. How do you take this challenging job? बिल्कुल आसान होता नहीं है ट्रैवल करना, फिर वहाँ पे कमेंट्री करना तपती धूप में और फिर वापस आना। बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, आसान होता नहीं है। और पिछले हफ्ते की अगर मैं बात करूँ, बहुत बिजी शेड्यूल रहा था। अब एक दो दिन की ब्रेक है, एक रन अवश्य मिल जाएगा यहाँ पे 82 खिलाड़ी के नुकसान पे। तो करंट रेट को काफ़ी अच्छा रखा है, ये अच्छी खबर है इस टीम के लिए। अगर मैं यहाँ से बात करूँ छानापुरा की टीम की, नियाज़ 11 की, रफ़ीक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनके पार्टनर भी उनका साथ दे रहे हैं, वो रन बॉल ज़रूर खेल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नेक्स्ट लेवल क्रिकेटर, थैंक यू सो मच नेक्स्ट लेवल क्रिकेटर की। अगर मैं बात करूँ हैंड्स टूर की, मैं बात करूँ कुछ दो चार दोस्त ऐसे जो हमेशा जुड़ जाते हैं डीप कवर पे, क्या कुछ होगा वहाँ से। एक टप्पे के बाद गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। पहले लगा था कैच को पकड़ना चाह रहे, लेकिन वो प्रयास इस प्रकार का था नहीं, थोड़े से एफर्ट्स दिखाने होंगे। विकेट अगर नहीं मिल रही हैं तो विकेट की तलाश करनी होगी। वो एक डायरेक्ट हिट हो सकता है, अच्छा कैच हो सकता है, वैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। पलड़ा बारी साफ तौर पे नज़र आ रहा है नियाज़ 11 छानापुरा का। 84 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 90 की ज़रूरत है मैच को जीतने के लिए। 70 गेंदों में 90 चाहिए और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में छानापुरा की टीम खड़ी है। 2 ही झटके लगे हैं इस टीम को अभी तक। जोरदार अपील और उंगली फिजा में वापस जाना होगा। बहुत निराश कदमों से वापस जा रहे हैं रफ़ीक। तीनों विकेट्स के सामने पाए गए और वापस जाना होगा यहाँ पे रफ़ीक को। जब लग रहा था कि अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है, रफ़ीक की विकेट हासिल की है यहाँ पे और कम बैक करती हुई टीम टाइटंस की। क्या बल्लेबाजी की रफ़ीक ने, शानदार बल्लेबाजी की आज। बैट्समैन समीर आए हैं बल्लेबाजी करने, समीर पॉल आए हैं बल्लेबाजी करने के। 84 3 खिलाड़ी के नुकसान पे क्या कुछ करेंगे अब यहाँ से समीर, ये देखने वाली बात होगी। Batsman looked disappointed. Meantime, once again the same problem. Too much of time being taken. Well, this is something we will definitely bring into the notes of Sports Association Rajpora. It's a one village cricket. And you just got to make your basics right out here at this very basic level. In the future, when you get to play for those reputed clubs, you definitely have no time to just get back. Still, it's hard to believe. And ultimately, Kulshidama Titan is making some comeback. Imtiaz picking his second wicket, the dangerous man goes. Rafiq was playing quite nice, batted beautifully for his around 38 runs. Samir Paul and Reis Ahmed. Everything not in control. Some controlled scenes could be seen, quite freaking. Wrapped on the pad, this time string down the leg side. Took his time and finally shaking his head. And Samir Paul, he was into that moment where his heart could have been in his mouth. He was battling for that decision. Goodness me, some comeback. It's like one day international is playing. Lovely, glorious. How easily. That's a back foot punch. Waited, and just bisected those two fielders. And finds a glorious boundary to open his account. And takes the total of his team on to 88. That was well-timed shot. Nothing wrong. He got all the time in the world. He knew where the shot was, where he was playing. And that was a wonderful thing. I just laughed about the shot of Samir Paul.
88 for 3. Imtiaz bowling his third. He has been just for some runs, but he has picked up 2 wickets. 86 more runs to get. Below 8 is what the required run rate is. Very easily to get. With these two both looking quite great hitters off the ball, things can be quite easy. Except if we find some quick wickets, but Gulshanabad wrapped on the pad again. That was straying down the leg stump. So that's the end of over. A successful one. 9 overs bowled. 5 extras so far. 88. Arshid. 88 for the loss of 3. Next level cricket, Mir Sam. You know that we are associated these days with Stars Cricket Club. That's why you do get too much of an action on Baba Nisora Sensation. But today and tomorrow you will be. There's a bit of a break from Stars streaming. Already through to the quarter-finals in Shalabuk, through to the quarter-finals in Wooler Cricket League, through to the quarter-finals in Wooler Premier League. At least they should get to the semi-final in one of these two and get to try and win the first title of the season 2025. It's very chilly, very cool, very cold. Even though it's very hazy, overcast conditions, might get rain anytime. Things out here in Sports Stadium, Rajpora. Khandi asking where it is. This is Rajpora. That's the Rajpora district, Pulwama. So, it's Tanveer getting ready to start his third. And the first ball he plays, gone through! This is lazy effort. Can you believe it? Sloppy. This is floppy. And you go with this flop. Things can be flop for you. The results can be a flop. And I tell this is hard to understand. Why would you allow those runs to leak and lack? Azim Khande says that it's raining out here in Pampur. Full toss driven straight down to the long off. Well, they come back for 2, but I guess no, just a single is what they will believe in. Thank you, Dar Mohideen. Thank you very much. I guess from Arigam. Absolute carnage to listen. Thank you very much for taking me and considering me the best commentator of the Valley, even though I stand nowhere close to some of the marvelous commentators out here in Valley. And it driven. There is an extra cover fielder deep, and he gets to the ball. In the meantime, there is a single to the total. 94 for 3. Just need 80 more in the 63 balls with the required run rate of just under 8. With 7 wickets in hand, should be an easy job. And once again, drivers. So, one important thing what we have seen and discovered so far, we haven't seen any technically sound batsmen. You could see these two not going great and smooth with their foot movement, even though they are playing the ball quite nice. But that technique is missing. And what do you reckon? This village level cricket actually, they need to find some some cricketing sensations of the Valley. Watch them closely and just get your basics right. बिल्कुल आपका कहना सही है. यहाँ पे उस प्रकार की टेक्निक अभी तक नज़र नहीं आई है और 2 गेंदें अभी भी बची है इस ओवर की. अगर वो विद रेस्पेक्ट टू टाइम जब इस प्रकार का प्लेटफॉर्म उनको मिलेगा तो मुझे लगता है विद रेस्पेक्ट वो टेक्निक आएगी और जब बहुत सारे मैचेस वो खेलेंगे फिर वो टेक्निक भी. और दूर से खेलना चाह रहे थे गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं. इस गेंद पे कोई रन आया नहीं. 94 खिलाड़ी के नुकसान पे 9 शरफ अकबल बाल अच्छे अकबल. एक गेंद अभी भी बची यहाँ से और हुआ भी हमारे साथ जुड़े. बहुत बहुत शुक्रिया आज़िम खांडे. पापुर में बारिश हो रही है भाईजान, बट यहाँ पे नहीं हो रही है. हो सकती है, मुझे लगता है लगभग 10-15-20 मिनट के बाद हो सकती है यहाँ पे भी बारिश. काफ़ी ओवरकास्ट कंडीशन है. हम इसीलिए चाह रहे थे कि कोई रिज़ल्ट आए इस मैच का, कि बारिश खलल ना डाले इस मैच में. और इस बार
कोई रन आएगा नहीं। ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ। 10 ओवर इख्ताम पजीर हो चुके हैं और जो रन यहाँ से चाहिए वो 80 चाहिए। 60 गेंद में 80 चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। और यहाँ से आप नहीं चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा समय ले, रिज़ल्ट चाहते हैं हम, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद एक रिज़ल्ट तो बनता है इस मैच का। बाबा के हाथ में गेंद नज़र आ रही है, क्या उनसे गेंदबाजी करवाएंगे? देखिए समय तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, अभी भी देखिए समय ले रहे हैं। ओवर कास्ट कंडीशंस है और किसके हाथ में गेंद थमाएंगे? आप देखिए बहुत समय ले रहा है। दिस इज़ नॉट फेयर, ऐसे तो काम बनने वाला है नहीं। रिजल्ट आना चाहिए उसकी। अब मुझे लगता है लगभग 20 या 25 मिनट बचा सकते थे अगर अंपायर स्ट्रिक्ट रहते वहाँ पे। आपका क्या कहना है इसके बारे में? Definitely, they could have just saved a lot of time in this game because we could see after every over gets done, a lot of time is being taken by the fielding unit just in selecting and making a choice of one more bowler. That's the thing where you got to look at. And I guess captain goes back to Ricky Baba. All set to start his third. None for 15 off his two. Thank you, Next Level Cricket. Thank you very much. Just being so desperate and waiting cautiously and anxiously when we get to the commentary. And inshallah ta'ala, your wishes will be fulfilled. All we need, it's all your blessings and prayers. Sameer and Reis playing on 5 and 8 respectively. See, fine. 4 fielders on the onside, long on mid-wicket, square leg, fine leg. Goes Baba into Sameer. And he stands tall and drives it square. Oh, not a good throw. Very shouty. Shouting loud on his thrower. Big wicket keeper behind. Nine more to get a 59. Easy to get with 7 wickets in hand. It's overcast conditions, raining in some parts and driven full toss. There is a deep extra cover. Once again, just a single makes that 2 of the first 2 balls. The game plan looks quite normal. From both the sides, we don't see any type and attempt of attack. It's quite understood on account of Niaz 11 Chanapura. They need just around 7-8 runs per over. Just one bad ball. And it flicks. That's a lovely shot. Bad line on the pads and better punishment by this man, Sameer Paul. A lovely way to get 100 on the board. It's 102 for 3. That's why as a bowler you got to bowl around that up stump or the fourth stump channel. You bowl on the pads, the results are in front of you. And way ahead this Niaz 11 Chanapura team is after the comparison of 10 overs. 102 for 3. And takes Sameer Paul onto the dozen with that 6. Meantime, we find a ball back. It's quite casual effort on account of this fielding side. The keeper should charge them up, should pump them up. Keep talking, keep mentioning, keep expressing and keep flowing and passing some words. 2 players in a team always. It's the captain and the wicket keeper who can keep you alive in the game. So for 8 of the first 3 balls, Sameer Paul waits again for Baba and just plays it onto the onside. Find a single, makes that 9 of the 4. 103 for 3. Good partnership between these two, growing more, getting more frustrations for Kulshanabad Titans. 71 more runs to get. Sameer Palashaya, yeah. It's Reis Ahmed now waiting. Sameer. And drifting down the leg stump. Should be a wide ball. It is. With an extra to the total.
Yaxşı Semir. Akşı reis. There's a correction in the name. Down the track, extra cover. Oh, drops. Not only dropping the catch, but I guess he has hurt his hand. He's down and under. He's going through pain. He's in extreme pain. He was in awkward position in coming for that catch. He got all the time, but ultimately could not settle for that catch. And ultimately, one more catch being put down. It's a survival to the race. And problems continue for Gulshanabad Titans. Tough day for catches. And in the meantime, they are through for a single as well. Mohammad Abbas, yes, I got it now. There was a bit of a correction. He was mentioning wrong names to both. Anyway, it's understood. No problem. That catcher, he might be going through some severe pain. Eventually, you are defending. You can't just convert those chances, but it was a simple catch, as simple as it was looking. 69 all to get. With these two, Reyes and Samir. Reyes at your screen, jersey number 07. How long this partnership will go, and are we finding any bowler from Gulshanabad breaking this partnership, which at the moment looks quite difficult. And in the meantime, there is a replacement for their injured fielder. Another drifting down the leg stump, another wide ball, making it quite easy, making that number of runs required get one more less. It's 68 now. It's 68 in 55. And he's gonna go just under 8 with the required run rate. Yes, 11 Rajpora has played some brilliant cricket. This one is up in air. That's in the gaps as well. It's running, and it goes over the fence. Backward square leg for 4. Another great over comes in, and just 16 from it. A lot of runs scored. And it's 11 gone, 110 for 3 seconds, and just 64 needed. And I could find it's a lot of chilly. It's chilly out here, very cold. It's a biting cold, but cricket makes you stay passionate and stay alive. बिल्कुल, और यहाँ से अब पलटा बारी नज़र आ रहा है छानपुरा की टीम का। विकेट्स हासिल करने होंगे, अन्यथा बहुत देरी हो जाएगी। देखिए फिर से समय ले रहे हैं वहाँ पे, किसके हाथ में गेंद थमाएंगे, इम्तियाज़ रहेंगे या कोई और रहेंगे, देखने वाली बात हुई। क्या कुछ परिवर्तन किया जाएगा, क्रिकेट से क्या गेंदबाजी करवाएंगे यहाँ से, ऐसा लग रहा है। जहाँ वाजिद को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया है। वाजिद ने 2 ओवर्स में 21 रन कंसीडर किए, 1 विकेट अभी तक वो ले चुके हैं। क्या कुछ करेंगे यहाँ से वाजिद। 110, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। 11 के बाद टाइटंस का स्कोर 98 था, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। 12 रन से आगे चल रही है टीम और विकेट्स भी 3 ही गंवाए हैं। तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में छानापुरा की टीम खड़ी है। 5 खिलाड़ी आप 30 गज के सर्कल के बाहर रख सकते हैं। डीप बैकवर्ड पॉइंट, एक डीप कवर को पीछे रखा है, लॉन्ग ऑन मिड स्क्वायर लेग को पीछे रखा है, शॉर्ट मिड पे भी एक खिलाड़ी प्लेस है। फील्ड सेट कर रहे हैं और चले पहली गेंद के साथ, सामने रहेंगे समीर। ड्राइव कर दिया, गेंद को पीछे खिलाड़ी मौजूद पे, 1 रन ज़रूर मिलेगा। 1 और रन का इजाफा है। नेल्सन पे पहुंचा है स्कोर को, क्या दूसरे की मांग रहेगी? जी हाँ, दूसरा रन भी मुकम्मल किया है और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 112। 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। खराब फील्डिंग हो रही है और विकेट कीपिंग उस प्रकार की नज़र नहीं आई है। यहाँ पे अच्छी फील्डिंग करनी होगी तभी आप मैच जीत सकते हैं। अब थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज भी डाउन नज़र आ रही है गुलशनाबाद टाइटंस की। अगर मैं बात करूँ, पलटा बारी छानपोरा का,
राजपुर पे आया, गेंद को खेला है पॉइंट की तरफ, अच्छी फील्डिंग वहाँ पे, 1 रन अवश्य मिल जाएगा। 113 3 खिलाड़ी के नुकसान पे 61 की ज़रूरत। जो विकेट पहले 9 के आसपास थी अब वो 7 के आसपास है। अगर यहाँ से 1-2 विकेट हासिल करेंगे तभी दवा बनेगा। 2-4 ओवर्स में कोई विकेट नहीं गिरेगा, फिर आपके लिए वो समस्याएं बढ़ जाएगी। चले एक और गेंद के साथ, लेमन कट के अंदाज में गेंद जाएगी फाइनल बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन के लिए, रन जैसे भी आया रन मैटर करते हैं। 57 रन की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। 51 गेंदों में 57 रन चाहिए मैच को अपने नाम करने के लिए। 98 5 खिलाड़ी के नुकसान पे मात्र 57 रन की जरूरत। तो रुका रेट 6.70 के आसपास है यहाँ से और 57 रन की जरूरत है। पलटा बारी नजर आ रहा है नियाज़ छानापुरा का। चले एक और गेंद के साथ, शानदार शॉट स्क्वायर के ऊपर से गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रन के लिए 123 3 खिलाड़ी के नुकसान पे अब चाहिए 51 रन।